वी ऑल प्रोक्रास्टिनेट, बट अगर मैं आपको ये कहूँ कि जो आपको लग रहा है प्रोक्रास्टिनेशन है, दैट इज़ नॉट द प्रोक्रास्टिनेशन दैट यू शुड बी वरिड अबाउट। तो दो तरीके की प्रोक्रास्टिनेशन होती हैं। एक वो जो हम सब फील करते हैं, जिससे हम सब रिलेट करते हैं, बट एक वो प्रोक्रास्टिनेशन होती है जो कि अनदेखी रह जाती है। दिस प्रोक्रास्टिनेशन इज समथिंग दैट इज़ अनफेल्ट। व्हेन आई से अनफेल्ट प्रोक्रास्टिनेशन, तो इसका मतलब है कि इस प्रोक्रास्टिनेशन का एक बहुत डिलेड इफेक्ट आता है। अब अगर हम अपने जॉब के या हम कॉलेज के बारे में बात करें या अपने स्कूल के बारे में बात करें, तो वी हैव डेडलाइंस ओवर, दैट्स व्हाई द इफेक्ट ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन स्टे कंटेन्ड। बट there are certain things in life that do not have a deadline. You just have to go out and get these things done. A classic procrastinator will fail to do all of that. तो भाई अगर तो आपके पास बहुत काम है तो मैं आपको सारे सोल्यूशन अभी दे देता हूँ। अपनी प्रायोरिटी सेट करो, just find a pen and paper, write them all down and follow that. Promise yourself good things right after you do your work. Create artificial deadlines for yourself and make your targets more achievable. Other than that, एक और टेक्निक है जो कि मैं खुद यूज़ करता हूँ and I call it love-hate hashing. And just stick around, I'll talk about that in the end. Other than that, there is also a bonus tip for those of you who want to stick around and get an in-depth view of what is procrastination and how do you deal with it. Trust the process. भाई procrastination को तुम एक दिन में, एक हफ्ते में या मे बी एक महीने में भी बीट नहीं कर पाओगे. It will take time. And my advice to you would be that अगर तुम ये सोचने लग जाओगे कि भाई मैंने अब सारे जो चीज़ें मैंने बोली या कितने और लोग हैं यूट्यूब पे उन्होंने बोली, एंड यू फील लाइक कि यार मैं इन सब की चीज़ें फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ बट मैं फिर भी नहीं कर पा रहा, इट विल नॉट हेल्प यू एट ऑल, बिकॉज तुम आधा से ज़्यादा टाइम बस अपने आप को ही कोसते रहोगे. रादर दैन लुकिंग एट थिंग्स फ्रॉम अ बर्ड आइज व्यू, just try and track everything down. In my opinion, Excel is the most powerful tool to exist when it comes to productivity. अपने एक्सेल पे तुम सारे टास्क जो तुम करना चाहते हो लिखो और नोट करो कि तुम वो चीज़ें हर दिन कर रहे हो कि नहीं. जस्ट मेक अ स्प्रेडशीट एंड नो दैट ओके मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, ये चीज़ नहीं कर रहा हूँ. एंड अगर तुम ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो, अगर तुम जेन्युइनली प्रोक्रास्टिनेशन को बीट करने की कोशिश करते हो, तो देन यू विल सी कि हाँ वीक बाय वीक मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ. सो व्हेन इट कम्स टू सेटिंग योर प्रायोरिटीज़, व्हाई इज़ दैट इम्पॉर्टेंट? तो अंदर ही अंदर हम सबको पता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है या कौन सी चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है. बट टिल द टाइम वी डोंट स्टेट दैट एक्सप्लिसिटली, वी डोंट टेंड टू टेक एक्शन टूवर्ड्स इट. अगर तुम एक पेन पेपर पे बस अपनी टॉप 5 प्रायोरिटीज़ लिखोगे, यू विल हैव अ क्लियर आइडिया कि ओके मैं जिन सारी चीज़ों पर टाइम लगा रहा हूँ, दोज आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट एंड आई शुड एक्चुअली बी फोकसिंग ऑन थिंग्स जो कि इम्पॉर्टेंट हैं. प्लान थिंग्स दैट यू enjoy doing after your the task in hand. For example, अगर मेरा कोई प्रोजेक्ट है या कोई असाइनमेंट है that I am not having fun doing, right, तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि हाँ मैं प्रोजेक्ट पे 2 घंटे काम करूँगा and right after that I'll do something that I enjoy. A very recent example of this, एक असाइनमेंट मिला था and I wasn't really enjoying doing it. एंड इन द बैक ऑफ माई माइंड मेरा बार बार दिमाग में ये चल रहा था कि मेरे को यूट्यूब का कुछ करना है, मुझे यूट्यूब का कुछ करना है. आई प्रॉमिस माई सेल्फ दैट ओके आफ्टर आई डू 7 or 8 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस असाइनमेंट, I'll do research work and I'll do some script work for my YouTube video, and that's exactly what I did. So I also got a script for my video that I actually enjoyed doing, and I also completed, let's say, like 40% of my assignment. So it was a win-win. Now this step has to be the most difficult one yet, because to be honest मैं भी अभी तक इसको ढंग से नहीं कर पाया हूँ. And in depth में इसके ऊपर कभी और वीडियो ज़रूर बनाऊँगा. But the step is to set and follow artificial deadlines or your own deadlines. And this is difficult because deadlines को हम हमेशा अपने से superior से वो करते हैं, associate करते हैं. भी हम deadline word हमारे दिमाग में आता है, we feel like okay, if we don't complete this task in hand, we will be answerable to someone. And that fear or that panic or whatever that is the reason why we all get the work done when the deadline is set by someone else. But when we set our own deadlines, we do not have anyone that we are answerable to, and that's why we fail to follow them. Okay, so this is one of my own techniques, and this is a love-hate
हैशिंग अगर आपको नहीं पता, इट्स नॉट एक्चुअली important, it's something related to computer science, but the technique is that you take something that you don't particularly enjoy doing and you take something that you do enjoy doing and you do those things together so that it becomes somewhat bearable. Okay, so an example of this would be LinkedIn and Netflix. So mera LinkedIn, it was very very weak because I never really focused on it, and अब मैंने करना शुरू किया, बट मेरे को लिंक्डइन चलाना बड़ा बोरिंग लगता था बिकॉज दिमाग जो है इट इज़ यूज टू इंस्टाग्राम रील्स और स्नैपचैट एंड दैट्स ऑल लाइक नॉट इम्पॉर्टेंट. व्हाट आई डिड वाज, मैं जो भी नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ देख रहा होता था, आई वुड ओपन दैट in a sub tab and I would be using LinkedIn in the other, and like that I could enjoy doing the task that is particularly boring. Okay, so up next would be break it down. Now what do I mean by that? You cannot do everything in a day. You have a lot of things that need to get done, and to expect yourself to do it all in a day or all in a week is just being way too hard on yourself. You have to be hard on yourself, but that does not mean that you will just be impractical. Now if for example I have this goal that okay, I want to get out one YouTube video in a week, if that is my goal, how should I break it down? तो मैंने क्या किया, मैंने अपने कैलेंडर पे खोला and I decided okay, so I want to be recording videos somewhere mid Saturday or mid Sunday, and on weekdays I can maybe spend 1 hour at the end of the day editing or previewing the video. Approximately that is about 9 hours of work on one video. If I do all of that in a day, it becomes very very hectic, and at the same time I will not be able to get anything else done. So breaking it down actually boosted my efficiency, and I actually enjoyed doing the thing. And you can do this with anything. For example, this is my 5-year goal and I want to achieve this and this in 5 years, then just know that okay, that will come, but what comes before that and what comes before that, and just try to achieve that. So that's how, in my opinion, you should approach things. For those who did stick around, here's a bonus tip for you all. And what I'm about to tell you is statistically proven that it boosts your productivity. And I myself, sometimes when I have like a lot to get done, I do follow this. I'm not saying that I follow it every day, but when I really have a lot of like things to get done, I do follow these things. At the end of each work day, just write down 5 things that you need to get done the next day. Online अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे को वो 6 ही बोलेंगे. I feel that when you write more than 5, you start to feel a little overwhelmed, and trust me, overwhelm होने से काम और ख़राब हो जाता है. After writing down 5 or 6 of those things, just prioritize them in the order of their importance. और जैसे ही तुम्हारा अगला दिन शुरू हुआ, तुम्हारे पास लिस्ट रेडी है, तुम्हारे को वो चीज़ें करनी है. Just plan them out that okay, how I'll approach this. भाई अगर तुमने 5 चीज़ें लिखी हैं जो कि तुम्हारे को पता है कि तुम्हें करनी है, और अगर तुम करना जेन्युइनली चाहते हो उन चीज़ों को, तुम 5 नहीं कर पाओगे, तुम 3 कर लोगे. 3 तो कर ही लोगे. अगर तुम बहुत ज़्यादा बिजी हो तो भाई still better than doing nothing. And that's exactly how you look at things. At the end of the day, you do not want to be so hard on yourself that भाई मैं आज कितना कुछ कर सकता था, मैंने आज कुछ नहीं किया. क्योंकि अगर तुम ऐसा सोचोगे तो तुम्हारा अगला दिन भी उसी एनर्जी से शुरू होगा, and you do not want that. And guys, remember, the problem is not doing the work, it's actually starting the work. Thank you for sticking around. My most recent upload would be somewhere over here, and there's this one video that I really think you should watch, and that's on procrastination, and add the link in the description. Thank you.